Can all of you can you see my screen and hear me? Yes, sir. Okay. Ibrahim, did you share the details in Zoom chat? Let him join first. And meanwhile, I'll open my machine also. Why is it working? Did you share credentials in Zoom chat? Yes, I did. You will have to share it again because session was ended. So वो chat वैसे ही चला जाता है. But I hope machine is working because I'm getting this login wala page. So I just need your credentials. Yeah, check my website. I'll check. So this is the machine which I have created, Tsoft Session42. Another machine we have here. So guys, one machine is ready. I will quickly just go ahead and stop the firewall वगैरह ताकि पिंग वहां पे ब्लॉक नहीं है. ये नहीं होना चाहिए कि आपका नेटवर्किंग वगैरह हो गया और पिंग जो है फायरवॉल लेवल पे ब्लॉक हो रहा है एंड यू आर ट्रबल शूटिंग एट योर VNet level. That should not happen. And this is okay. If you do not understand this, this is fine. ये वैसे भी OS team का काम होगा. Okay, how do I check IP address of this machine, the one which I have created? IP config से. IP config. So what is my IP address? Oh. 10.1.4. Right. And which one I have used to take remote? Which IP I have taken to to take remote? Which IP have I used? Private. No, to take remote. To take remote, I have used public IP. Public. Sorry. 2091.205. But we are Public. dealing with private IPs. Okay, so I'm able to log into both of the machines. On this machine, my work is done. I just have to ping. Okay, यहाँ से मैं ping करूंगा इस machine को. First, let me run the same command on this one also. Which will shut off the firewall. Which could be one of the reasons जिसकी वजह से ये होता है आपका ping block होता है. So let me do that first. Looks like इसका size थोड़ा सा छोटा है machine का. Same command I will use to check the IP address. This is going to be difficult now, guys. This is going to be difficult. What has happened here? Who can tell me what is the issue here? We'll try to figure it out, but who can tell me what is the issue? यहाँ पर क्या? Same IP. Same IP, right? Yes.
So I hope when I ping this, वो machine अपने आप को ही ping नहीं कर ले. Let me see that first. Okay, we will not be able to proceed with this one, guys. Can anyone tell me why? Yes, guys, are you getting this scenario? Anyone who understood the scenario or what is the issue here? Yeah, the IP is same. Right. So if I'm trying to ping, if I'm trying to ping this machine from here to here, I will not even come to know कि ये इसको ping कर रहा है या खुद को ही ping कर रहा है, because Right. self IP जो है हमेशा ping होता है. So now if you say it is already pinging, तो I cannot establish that fact कि ये इसको ping नहीं कर पा रहा है. वो VNet peering करने के बाद भी मैं इसको जब ping करके देखूंगा, I will not be sure कि ये इसी को ping कर रहा है या किसी और को ping कर रहा है. Right? So we'll have to change one of the IPs. So I will leave this machine. I'll change my IPs, my machine's IP. So how can we do that now? IP कहाँ पर reside होता है? सबनेट नहीं, machine पे कहाँ पे reside होता है? Networking से Nick. Sun is asking, Nick. how can two machines have same IP? Why do you think these two machines have same IP? Is there Default anyone? लिया, I guess, right? डिफॉल्ट लिया था और विद अ डिफरेंट रीजन आई बिलीव. हाँ, different region. Not really. Rather different VNet, I will say. Different VNet, right? Yes, Correct. different VNet है इसलिए. I hope Sana you got your answer, because these are two different networks completely. Let's say ये आपका कोई और ऑफिस हो सकता है और ये मेरे घर का ये है. And I have told you that private IPs cannot be repeated, but within that same network. But ये अपने आप में दो अलग, just because you are watching them on same screen, that does not mean कि ये connected है या same portal में है, that does not mean these are connected. ये अपने आप में दूसरे machines है, दूसरा network है. So what I'll have to do here is I'll have to change my machine's IP. So कहाँ पर IP reside होता है? निक पे. NIC. So I go here. This is my NIC. Okay, and it shows my NIC's private IP is this. Do you want me to change IP or create a new machine? If you guys are getting confused, I do not want to do that. I can simply go ahead and create a new machine if you want. Bhai, if you change IP, we'll get to know. Like, Change how to IP. Okay. Yeah. So you go on your NIC. On your NIC, you have this menu. On your NIC, you have IP configuration. And here you have an option to change your IP. Okay. I think we'll have to restart the machine for this. Let's see. Or let me try adding a new. Can we have two NICs or two IPs on single NIC? Yes. Yes, I believe. But सुनील भाई एक को डिसअलोकेट कुछ करना पड़ता, right? Yes. Let's see. नहीं करना पड़ता. You can have multiple IPs on single NIC also, and you can have multiple NICs on one machine. तो अगर उसका ये रेंज अगर चेंज करते तो शायद ले लेता. Range as in 10.1.0.5 कर रहे थे ना हम लोग. तो अगर उसको 192 करते तो ले लेता क्या? Can we do 192? 192 आता कहाँ से? Can we have a random IP directly? IPs का limitation क्या है? If I want to assign an IP on this machine, what is my limitation? From where can I check my limitation, guys?
Yes guys, what is Address the space. limitation? Address Subnet. space, right. Address, पहले VNet का address space, उसके बाद subnet का address space. So बराबर. do we have 192 वाला address space यहाँ पर? No. Right, so we cannot take 192 वाला. So Okay. let's say I have assigned Okay. another IP. We'll see if that is being utilized here. I think नहीं दिखेगा यहाँ पर. No, we'll have to restart the machine. So let's better do one thing. I'll quickly create another machine in the same this one. Change IP. I do not want to show it to you right away इतने जल्दबाजी में, right? Because change IP बहुत ज़्यादा common task है and उसको बहुत आराम से आप लोगों को सीखना है in detail. Networking वाले section में हम change IP, change DNS ये सब करने ही वाले हैं. So I do not want you to learn यहाँ से के 2-4 step में सीख लिया और कुछ समझ में नहीं आया. That should not happen. So it's better that I create another machine very quickly. So I'll go to the same this one same resource group. And let me see if I can divide this virtual network, or I'll simply create another one. कोई 192 वाली range में मैं ये करता हूँ, so it will be easier for you guys to understand and see. Let's say I'm going to Germany. By the way, can I create a an Ubuntu machine, a Linux machine, and ping to a Windows machine? Is it possible? Yes. Yes, it is possible, guys. I just don't want to do it now. वो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के. But that does not mean कि हम Linux machine छोड़ने वाले हैं. एक बार थोड़ा सा concept आप लोगों का clear हो जाए, then we will keep playing with Linux machine. They are easy to deploy और उनको भी learn करना it's must. So here if I go, I'll create a new one. वैसे यहाँ पर if you see, इसने already नया ले लिया है. Yes. But still now I want to create. जब हम बना ही रहे तो completely एक new बना देते हैं हम लोग. Yes guys, why this is not a valid CIDR block? Who can tell me? (16). Why this is not a valid CIDR block? We are If you have entering into used it, AZ3. no, if you use it 192.168.0.0, then you can use CIDR block 16. It will give you all the addresses. Got it, guys? Because I am already breaking the network here. Hence, I will not be able to use 16. And I want just one subnet, so that is fine. I'll quickly create this. I'm using the whole range. Yes, guys. While this machine is being created, anyone who did not understand anything, कोई doubt या जो goof up हुआ वो नहीं समझ में आया किसी को. See, unless you practice
you will not understand, and the moment you start practicing, ये सब आप लोगों के साथ भी होगा कि यार ये गलत बन गया ये मशीन, and this is how you will get your own scenarios. इंटरव्यू में बोलने के लिए आप लोगों को काम ये काफी काम में आएगा कि okay we used to get this and okay I remember there was a time I got this sort of request, ऐसे हो गया था, this is what I did. Client came with this kind of issue where he had two machines and two different virtual networks, and later they wanted to communicate those machines, but they realized कि वो दोनों का IP same है, and then he wanted me to deploy a new machine for them, but I suggested that we can change the IP address. So this is how you can create your own scenario. Okay, let me close this machine, the one which is this one. I'm closing this machine. Okay, if I shut down a machine from here, so what will be the status on Azure portal? I've shut down this machine now. What will be the status of this machine on Azure portal? Stopped. And if I stop it from here, then what will be the status? Stop. I guess Deallocate. You will lose the public IP. Yes, I'll lose the Stopped public and- IP, but yes, stop deallocated. Stopped and deallocated. Deallocated, right? Plus public IP, if you want, you can reserve it while stopping this machine. You get a pop-up that do you want to preserve that public IP. But I've been telling you, public IP हम ज़्यादा use करने ही नहीं वाले किसी base में. ठीक है? So now we are trying to ping which two machines? ये वाला machine को हम इससे ping करके देखेंगे. 10.1.0.4. So यहाँ पर जो 192 वाला machine आएगा. What will be the IP address of this machine, guys? Looking at the CIDR block, what do you understand? जो IP use किया है मैंने. 192.168.0.5 या 4. Okay. Why 4? We said 5 IPs are being used, right? So why 4? So the range starts from 0. Okay. 0, But still, if I 1, count 0, 1, 2, 3, if I count 0 as well, 0 एक use हो गया, 1 दूसरा use हो गया, 2 तीसरा use हो गया, 3 चौथा use हो गया. the last one goes for broadcast, it's 255. Right. So it's It's not 255 all the time. Will it be 255 Yes. in this case? 4 in this case, I believe. नहीं, not 4 तो इसके लिए होगा machine के लिए. I think Amit got the question. Not 255, the last range of the IP. In case इस वाले case में जैसे था 124. So it is not always 255, right? It is the last IP. Got it, Amit? Clear? yes, right. It's clear. Okay. So the machine is ready. To log in, we'll be using this IP. So this is the IP we will be pinging from this machine. Let's try that now. 192.168.10.4. This minus T, it means वो continue ping करता रहेगा. If I ping it only once, उससे क्या होता है? 4 ये भेजता है, पैकेट्स भेजता है, and then it drops. But आपको कोई connectivity check करनी है, किसी तरह का troubleshooting आप कर रहे हो, so then you always use this command
जिसपे -t लगाते हो आप, इससे क्या होता है वो कंटिन्यूस पिंग करेगा, अनलेस यू स्टॉप इट वो पिंग करता रहेगा, एंड देन यू विल कम टू नो कि पैकेज ड्रॉप हो रहा है बीच में किसी तरह से, पूरी कनेक्टिविटी नहीं है, वॉट एवर इट इज, यू विल कम टू नो. डिड यू गेट इट गाइस? Yes, sir. So I'll just turn off the firewall first on this machine, and I'll try to ping the other machine, which is क्या है इसका IP हमारे पास 10.1.0.4, right? So if I do not put T, what will happen here? See, this is the IP we have, right guys? 10.1.0.4, 192.168.10.4. एक मशीन है आपकी आदित्य VNet में, the other machine is in Ibrahim VNet. It is in East US location, it is in Germany West Central location. We are trying to ping from this machine to 10.1.0.4, and from 10.1.0.4 से हम कौन सी मशीन को पिंग करने की ट्राई कर रहे हैं? 192.168.10.4. Just because see I typed T, इसका मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. If we do like this, तुमको पता नहीं चलेगा कि कब पिंगिंग शुरू हुई और कब ये हुआ, unless we try it again, but we will not come to know. So what do we do normally? We try to ping IP address and -T. So are these machines communicating with each other? Can I have some application? मैं कुछ application वगैरह install कर सकता हूँ कि इस पे application install कर दिया जिसका database यहाँ पर होगा. If you guys remember 3-tier application we discussed, is it possible in this case? No. No. Why? Because these machines are not talking to each other. So now let's quickly get into VNet peering, and we'll do the VNet peering and we'll see how these machines start talking to each other. So this is all we need. I mean, it's not necessary कि इसको हम देखते भी रहे, but just for your understanding क्या how it looks जब ये reply करने लग जाएगा. So you'll come to know exactly how it works. So now the VNet will be between which two VNets? VNet pairing किस दो VNets के बीच में होगी? This is the VNet we have. Let's say ये एक हमारा VNet है. इसमें एक मशीन है हम लोगों की, right? And the another VNet is this is. Let me. Is it clear, guys, or are you getting confused? Do you want me to create a new diagram? Clear. Clear. That's okay. We'll create a new one. Yeah. This is one VNet. This is one VNet. This is the VNet. It is in East US, and this has machine named demo VM. We are not dealing with public IP. We will not even discuss. वो बस remote लेने के लिए मुझको कुछ चाहिए, इसलिए we have used. Okay, this is the case. Sorry, this is the case we have. Coming back to this VM. So this is the VNet we have. It is in Germany. Germany Central वगैरह में कहीं पर है, but I think this is enough. It is in Germany West Central. Okay.
I'm not specifying subnet because that is fine. हमने VNet level पे कर दिया तो सारे subnets अपने आप cover हो जाएंगे. This is the IP address और machine का नाम है कुछ Tsoft Session43 VM005. ठीक है. Now these two IPs are not able to communicate with each other as of now. ये दो IPs, right? Which means ये दो VNets आपस में बात नहीं कर रहे. Now we have what are we trying to do is VNet peering. ठीक है. So what do you think guys? VNet peering कहाँ पर होगा? इस VNet पे होगा या इस VNet पे होगा या दोनों पे होगा? किसी एक पे होगा. Anyone else? What do you think? Should it be on both of them, one of them? If one of them, which one? So I think it depend if we are going for inbound and outbound, शायद दोनों पे होना चाहिए फिर. Okay. No, here's no there is no inbound outbound वाला कोई concept नहीं है यहाँ पर. VNet peering is simply that you connect to networks. यहाँ पर आप port वगैरह कुछ भी नहीं decide करो. It's simply a peering. ठीक है. It is as good as कि यहाँ पर दो नेटवर्क ये है. लिटरली अगर इसको आप फिजिकल इसमें देखना चाहो तो ये दो नेटवर्क है. बस आपको कुछ करना है यहाँ पर तो एक केबल का लाइन बिछा देना है. That's all you are doing. तो केबल सिर्फ किसी एक कोने पे कनेक्टेड होने से कुछ सेंस बनेगा? No. No. So it has to be done on both of them. Earlier in Azure Classic क्या होता था? आपको यहाँ जाना पड़ता था. यहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन करके देन आपको इस VNet पे जाना पड़ता था. एंड देन आप उसको ये कर सेम कॉन्फ़िगरेशन इस पे करते थे आप लोग एंड देन कम्युनिकेशन स्टार्ट होता था. बट नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव इम्प्रूव्ड इन दिस मैनर दैट यू कैन गो टू वन VNet and sitting at this VNet you can configure this one also. मतलब इसको कॉन्फ़िगर करते हुए उसी पेज से आप इसको भी कॉन्फ़िगर कर पाओगे. Are you guys getting it? कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है. Only the difference is that कि पहले दोनों में अलग-अलग जाकर आपको ये करना पड़ता था. And now you can sit here on this page और यहीं से आप इस VNet को भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो और इस VNet को भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो. आदित्य VNet को भी और इब्राहिम वाले VNet को भी किसी भी एक से. I can go to Ibrahim's VNet and I can connect both of them. I can go to Aditya's VNet and I can configure both of them. Is it clear, guys? Yes. So let's go to portal. We will go to Aditya's VNet. Okay, now where can I find the VNet? We have established everything. क्या इस VNet को इससे connect करना है, सब करना है. Where can I see that VNet? I mean, how do I go to that VNet? Where do I see it? Yeah, on the Okay. upper hand. Yeah, virtual is- network subnet. Right. Yeah. Which is the other way to find VNets? Okay, I have planned. I am on this page. Now I have got a requirement. I have got a case कि ये दो VNet communication करना चाहिए आपस में. I have got those two names. Now what? You can click on virtual networks. Third tab. Yeah. ठीक है guys, you go from there or you go from anywhere. Ultimately आपको जाना कहाँ है? दोनों में से किसी एक VNet पे. I can either go to Ibrahim's VNet or Aditya's VNet. Okay? Not going to this one. Sweden वाला ये हमने गलती से बना जो same IP था, so not touching this one. I delete that one. So I'm going here. Where do I see peering option? कल बताया था वैसे हमने. Under It's below setting, the left-hand हाँ, side. वहां पर भी it's below the DNS servers. वहां पर भी and it is here. ये इतना बड़ा यहाँ पर भी दे Okay. रखा है. You do it from here or do it from here. It's one and same thing. So click on peering. Click on add. Now it is asking for a name. Name किस तरह से दिया जा सकता है? That Aditya to Ibrahim. I can write that. So this is going from Aditya to what's Ibrahim. इस तरह के नाम नहीं होते, हमेशा कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं. जैसे ये मशीन का मैंने नाम रखा है वैसे कुछ नाम होगा. लेट्स से आपकी कंपनी है कोई अगर XYZ है सो XYZ हाइफन prod हाइफन VNet 0010 हाइफन इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स सा नाम होगा और यू विल हैव टू फॉलो नेमिंग कन्वेंशन. ठीक है, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस वी आर यूजिंग दिस वन. Only 10 minutes are remaining, so I want to finish this practical today. Traffic to remote virtual network.
अलाउ, ये सब हम बाद में देखेंगे इन डिटेल, मे बी इन टुमारो सेशन, ठीक है। वीनेट खत्म नहीं हो रहा है, वीनेट में और 2-4 वैरायटीज है, we'll see them, but as of now just wanted to show it to you. So we'll keep allow, default options के साथ जा रहे हैं आज हम। ट्रैफिक फॉरवर्डेड फ्रॉम रिमोट वर्चुअल, बाय द वे इसका रिमोट वर्चुअल नेटवर्क क्या होगा? ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, विच इज द रिमोट वर्चुअल नेटवर्क फॉर दिस वीनेट? कौन सा है इसके लिए रिमोट वीनेट? कॉन सा है? विच ऑन इब्राहिम विच भाई का। वीनेट आर वी? यस, वी आर ऑन आदित्य's वीनेट। सो ये तो हमारा हुआ लोकल वीनेट, एंड वी आर डीलिंग विद Yes. इब्राहिम्स वीनेट, सो दैट इज आवर virtual VNet, that is our remote VNet। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रैफिक टू, तो इब्राहिम भाई के VNet पे ट्रैफिक अलाउ करना है, ठीक है, अलाउ। ट्रैफिक फॉरवर्डेड from a remote virtual network, this I'll explain later, I'll just leave it allow। gateways, leave it। तो पहले आपको बस इतना ही करना होता था, and you had to click add and then you had to go to another VNet, but here what they have done is एक पेज पे ही आके वो लोगों ने आपको दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। नाउ इफ आई क्लिक हियर, नाउ इफ आई गो टू दिस वन, ये मैं जाता हूँ इब्राहिम भाई के वीनेट पे, ओके, एंड इफ आई गो टू peering, do I see any peering as of now here? No. Okay, now we will configure here और यहाँ पर अपने आप अपीयर हो जाएगी। So what are we doing? Instead of going separately, एक ही विंडो में Azure ने आपको एक्सेस दे दिया है कि आप यहीं से ये कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होता था, बस ये तीन चीजें सेलेक्ट करके ऐड करते थे, वहां पर जाके ऐड करते थे, एंड दैट इज इट। सो दिस वर्चुअल नेटवर्क, we are on Aditya's virtual network. I have been telling you guys always to look at this site to navigate. So we are on which network? Virtual network? Aditya. So it says this virtual network. Peering link name Aditya to Ibrahim. Traffic to remote? Yes. This I'll explain later. Now remote virtual network. Remote virtual network कौन सा है हमारा? Ibrahim. Ibrahim's Ibrahim. virtual network. Right. So now we are configuring Ibrahim's virtual network, sitting on the same page. ठीक है, we are not leaving the page. Initially हम लोगों को जाना पड़ता था Azure Classic में। वैसे अभी Classic वाले क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। इन केस किसी ने पूछ लिया, यू कैन सिंपली से Classic पे काम भी नहीं किया हम लोगों ने, बट याद आ जाए तो बोल सकते हो कि Classic में इतने सारे लिमिटेशंस थे जो न्यू Azure पे ये सब ये हो गया है, ठीक है। सो नाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। तो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पर? इस तरह से कुछ, ठीक है। नाउ दिस नेटवर्क आई एम कॉन्फ़िगरिंग गाइस, अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? Yes. ओके, हियर इट इज क्लासिक, बट वी आर नॉट डीलिंग विद, इस पे क्लिक भी मत करना, छोड़ दो इसको। नाम तो हमने दे दिया, अब हम ऑलरेडी इस वर्चुअल नेटवर्क पे है, मतलब हमने एक वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर रखा है। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू सेलेक्ट माय रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क ले रहे हैं हम इसमें? First वाला. Ibrahim's Right. Right. Yes. Now this is called global VNet peering. It is called global only because of one reason. Why it is called global? दो अलग रीजन है इसलिए. Exactly. अगर ये सेम रीजन में होते तो नॉट अ सिंगल स्टेप, यहाँ से कोई भी एक भी स्टेप आपको डिफरेंट नहीं करना होता। लेट्स से आई एम गोइंग विद टेराफॉर्म, टेराफॉर्म मेरा ईस्ट यूएस में ही है, या किसी में भी सेम चीज आपको करनी होती। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ जार्गन, एक जार्गन है, बट क्वेश्चन कई बार आता है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वीनेट पेयरिंग, ठीक है। तो स्टेप्स में कोई इशू नहीं है। देन अगेन ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। नाउ व्हिच इज द रिमोट वर्चुअल नेटवर्क फॉर दिस वन? नाउ वी आर ऑन इब्राहिम्स वर्चुअल नेटवर्क। तो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क कौन सा है इसके लिए? आदित्य. Aditya. Aditya. Right? Simply click add and that is it. It is validating. It should be done. Now in some time you will see now say it is updating यहाँ पर। refresh थोड़ी देर में आपको you see, did we do anything here? Did we come to Ibrahim's VNet peering? I mean literally did we come here and did we do anything here? No, we did not. No. Okay? We configured it there and it is appearing here. So तो this हमें is how कोई भी इब्राहिम के नेटवर्क पे जाके हमें कुछ भी नहीं करना है. नहीं, कोई भी एक नेटवर्क आप एक सेलेक्ट कर लीजिए एंड इट गिव्स यू ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर बोथ ऑफ योर नेटवर्क्स। You did it, but you didn't have to come here.
वो जो आपने सेकंड वाला फिल किया था वो इब्राहिम के नेटवर्क पे ही हम लोग फिल कर रहे थे, बट यू डिडंट हैव टू कम हियर इफ यू स्टार्ट So फ्रॉम दोनों पे इब्राहिम करेगा। नेटवर्क। यस, वो दोनों पे कर रहा है। यस, जो है आस्किंग समथिंग। I was thinking कुछ अलाउ वगैरह का ऑप्शन होगा नहीं होगा। यस, वी डिड सपोज दैट। मेरे अच्छा आदित्य Okay, के जो हम फॉर्म भर sorry, रहे didn't थे mean to वहाँ interrupt. पे Let me come here and show it to you guys. These machines started talking. Can you see, guys? yes Let me Yes. just maximize this. थोड़ा सा better दिखेगा आप लोगों को। So this machine and this machine, now they are talking to each other. Can you see this? Yes. So this is what your VNet peering is. Let me quickly explain it one more time. Short में नहीं आता है समझ में, we'll do it tomorrow again. Don't worry. So yes, Johi, I think you have some doubt here. So what did I do here? See, where am I here? I am on Aditya's VNet under peering section. And yes, guys, one VNet can be paired with multiple. ऐसा नहीं है कि एक VNet और दो VNet में हो गया तो बस वो खत्म हो गया. Now I want to pair this VNet with someone else. वो भी हो सकता है, some other VNet. So I came here. Where am I now? It says this virtual network. This का मतलब क्या हुआ? Where am I here? I am here on Aditya's VNet. Aditya's virtual network. Now I am configuring Aditya's virtual network. So I am typing Aditya. I will not say, hit on add. Just repeating this Aditya, and here I'll type Ibrahim. ठीक है, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? यहाँ पर ये पूछ रहा है ट्रैफिक टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क अलाउ करना है, हमने बोल दिया अलाउ। इस केस में वर्चुअल नेटवर्क कौन सा होने वाला है हमारा? इब्राहिम। ठीक है, ट्रैफिक फ्रॉम रिमोट वर्चुअल नेटवर्क तो फॉरवर्डेड फ्रॉम रिमोट, ये फॉरवर्डेड वाला आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट डू यू सी हियर आई एम अलाउिंग द ट्रैफिक। यहाँ पे मैंने ये अलाउ कर दिया एंड दिस इज इट। अपने वीनेट को मैंने यहीं पर, दिस इज इट, आई एम डन विथ माय वीनेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीनेट, रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मुझको पहले नाम देना है। सो लेट्स से आई हैव गिवन सम नेम। ठीक है, and here I'm selecting something. Here I'm selecting something. Here I've selected Ibrahim's VNet, and here I say, see it already, it says that already paired. मतलब एक ही VNet पे दो pairing नहीं कर सकता obviously. ये pair already बना हुआ है. If I want to pair Aditya with something else, I can do it. Ibrahim with someone else, I can do it. But जो same चीज already बनी हुई है उसको एक और बार नहीं बना सकते, इसलिए आपको दिख रहा है error. ठीक है, but you selected this, and here now where are you? Now you are at Ibrahim's virtual network. Now it is asking, will you allow traffic to remote virtual network? इसके लिए remote virtual network कौन सा हुआ? Aditya's. Aditya. And why am I able to do this? Because I have access on subscription level. What I understood by your doubt, Juhi, that you have a doubt because okay, how can I do it? Sitting here, मैं किसी का भी virtual network कैसे connect कर पाऊंगा, right? I am able issues to का do मेरा it. questions था। I am able to do it because I have equal access on subscription, जहाँ पे मेरा इब्राहिम भाई के resource group पे भी access है. Now, if you try to do it on your resource group, if you try to do it with Ibrahim's VNet, नहीं होगा because you do not have access on Ibrahim's VNet. He will have to Right, give okay, access, otherwise you will have to do your own. और किसी न किसी को access share करना पड़ेगा. got it. So I got hope it, yeah. your questions are answered. Still, if you guys have any questions, please let me know. And do practice इसको और कल वाले NSC को practice करो. If there is anything, put it in the group and we'll see. But tomorrow also we'll be continuing VNet peering के topic को हम करते रहेंगे. ठीक है guys, I'll stop the session. Thank you. भाई Thank you. डेलीट कर दो ना अपना सर्विस Sorry? रिसोर्स VM मेरा वाला हाँ, I'll आप ही delete. कर दो। I'll delete everything. Don't worry. Yeah, चलो. बाय थैंक यू।